Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar. नमस्कार। मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक तथा शेयर बाजार के ताजा समाचार आपके लिए लेकर आए हैं। हम उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है आर्थिक विशेषज्ञ उद्यन रे जी को। उद्यन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम उद्यन। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ में। राजेश, Domestic stocks witness gains of around 1%. Sensex closes above 60,600 level. Nifty settles above the 18,000 mark. Gold hover around 56,400 rupees per 10 grams at MCX for February contracts. And Brent crude rises to $85.50 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में लगभग 1% की बढ़त। सेंसेक्स 60,600 और निफ्टी 18,000 से ऊपर जाकर बंद हुए। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी के वायदा कारोबार वाला सोना 56,400 रुपए प्रति 10 ग्राम और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $85.50 प्रति बैरल तक पहुंची। और शेयर बाजार के साथ कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 1% की बढ़ोतरी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की प्रमुख 30 कंपनियों का सर्वोच्च सूचकांक 60,600 से ऊपर जाकर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी में सूचीबद्ध 50 प्रमुख कंपनियों का सूचकांक 18,000 से अधिक के स्तर पर पहुंच गया। वैश्विक शेयर बाजार के नकारात्मक रुख के बावजूद दोनों सूचकांकों में वृद्धि दर्ज हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 563 अंक ऊपर चढ़कर 60,656 दर्ज हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 158 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 18,053 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चले तो छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में नरमी आई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में मामूली 0.1% की गिरावट दर्ज हुई। The Sensex and the Nifty today witnessed gains of around 1%. Index of top 30 companies at Bombay Stock Exchange ended above 60,600 points. The index of top 50 companies at the National Stock Exchange closed above the 18,000 mark. Both stocks rose even as the cues from global markets were negative. The Sensex climbed 563 points to settle at 60,656. The Nifty also gained 158 points to finish at 18,053. In the broader market at the BSE, the mid-cap and small-cap indices slipped marginally by 0.1%, underperforming the Sensex. In the Sensex pack, 22 companies posted gains while 8 witnessed losses. Larsen & Toubro was the top gainer as it rose 3.5%. Hindustan Unilever gained 2.7% and HDFC added 1.8%. On the other hand, SBI declined 1.7%, Bajaj Finserv fell 0.8% and IndusInd Bank slipped 0.7%. In sectoral indices at BSE, 17 sectors gained while 3 logged losses. Capital Goods Index gained 1.6%, Utilities climbed 1.5% and Power Index rose 1.4%. On the other side, Services and Consumer Goods, both sectors added 0.2%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,621 companies gained while 1,890 fell. Shares of 133 companies remained unchanged. What do you see the way the stocks behave today? Are they in sync with the way the Asian or the world economies have performed so far?
Well, Rajesh, as I think you would read in the headlines a little later, I think there was a slightly negative movement in Japan after the announcement by the Bank of Japan. So that is one of the things that global investors are looking at. But as far as India is concerned, some of the reasonably, shall we say, the economic indicators are seeming to be reasonably okay. Inflation worries are not. People are not worrying about inflation going up. They seem to be at a certain level moderating. So that's something which is giving comfort. There's lots of data actually, Rajesh, that is stated to come out from the US that might just end up influencing the market somewhat. But as we go along in another 10, 12, 13 days, it's more about the budget that we would, the markets might look out. Maybe some anticipation of any changes in personal taxation and things like that. Those might be some of the things that might interest people. And of course the data, any data in the US which might indicate some kind of softening by the softening of the Fed's rate hike stance. That might just be something people would be looking at. They're really looking at it badly. They're not getting it. Okay, so what I hear you say is that the domestic market is attempting to gain in comparison to the weak YTD performance, which was caused in anticipation of the soft Q3 results and the union budget. The results are not for the large company. It's not all that bad. It's pretty good. I was coming to that part. The latest set of financial announcements on the IT and banking is quite encouraging. Yeah, a lot of people are expecting good things to come out from NBFCs, the non-banking set, and typically because Rajesh, as the rates go up, people would look at borrowers. They'll look at and who need loans. Typically end up reaching out to NBFCs. So it will be interesting to watch. And the good part is, whether it's banks or NBFCs, the statement, the balance sheet, and the financials are much cleaner than what they were some years back. So that's something that gives you a lot of confidence, because when things are not globally, they're not that great. You would want certain sets of reassurances. So banking, and they also make up an important component of your indices. So what you're saying is, again, depending on the second line of Q3 results, the budget outcome and the Fed policy statement which you mentioned, then these positive undercurrents, do you think the trend will continue in the short term? I would imagine so, and there's every indication. Although there are numerous experts who are arguing that we are richly valued, or we are right there. Those are tactical things that happen from time to time. People can change their allocations here and there, but because some of the other markets are not doing that well, and they have done so badly in last 1 year, we do stand out quite a bit. So things are actually, if you leave aside not so great areas, shall we say exports, because if you're going to be exporting to certain countries, the larger sort of economies, or the more prominent sort of economies, and the richer countries, shall I say, and their growth rate is not looking up, then your exports are going to see an impact, which they have. So if you leave aside those things, then the remaining part, which is a huge part, they are looking pretty good. You compare that part with other comparable economies, I suspect that we are going to look pretty good, and that's why you are seeing, even if there is a tactical movement here and there of capital, the money keeps coming back. Then if we were to evaluate today's performance, we gained 563 points, even when the stocks rose, when the cues from the global markets were negative. How do you decipher this? And this too happened not throughout the days, but toward the end of the trading. Yeah, Rajesh, I don't think the US markets were in action in that sense.
and they were closed. Yeah, so and they seem the global market seems to be driven by headlines coming out of from there, because they are the ones who opened the water taps as far as liquidity was concerned. So that has influenced global markets. If they now take the water out of the system, which is tighten the system, then naturally the reverse is bound to happen. But I would imagine that maybe a day or two, if we see this thing going, then it becomes really, really credit worthy, because that will start indicating the kind of confidence people have in our markets. Of course, Rajesh, we also need to remember that there is a lot of investment from our domestic retail and institutional investors who are managing retail money is going into the market. So anytime somebody feels not so great, I mean, I'm talking about foreign institutional investors, we have a counterbalance, which was not available, say, about 10, 12, maybe 13 years back. So then मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे यहाँ पर, जैसे अगर स्ट्रक्चरल डेटा की हम बात करते हैं तो शेयर मार्केट में जो बीएसई और एनएसई को छोड़कर छोटी और मझोली कंपनी को अगर हम जाएं, उस तरफ अगर हम देखते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा गैप नजर आ रहा है। बड़ी कंपनियों में उछाल बड़ी तेजी से आ रहा है, छोटी कंपनियों का उछाल उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा, खासतौर पे जो नए नए स्टार्टअप्स हैं। अगर बीते 1 से 2 साल का हम डेटा देखें, आज भी मैंने वो डेटा देखा तो मुझे वही चीज नजर आई। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और ये जैसे हमने 2 साल की महामारी के वक्त देखा था, जिनके पास वर्चस्व है, जिनके पास ताकत है, फाइनेंशियल ताकत है, वो उससे बेहतर उभरे हैं। और आपने देखा होगा उन कंपनियों ने ब्रांड्स खरीदे, कंपनियां खरीदी, मर्जर एंड एक्विजिशन हुआ, लोगों ने अलायंसेस की, तो जो ताकतवर थे और ताकतवर हो गए, और जो इस प्रतिस्पर्धा को झेल नहीं पाते वो या तो जुड़ गए या अलग हो गए या और पीछे हो गए या लुप्त हो गए। तो ये कई बार क्या होता है, जब बड़े ऐसी जबरदस्त इवेंट्स आते हैं जिसके इम्प्लीकेशन फर्स्ट ऑर्डर ही हमने अभी तक इम्प्लीकेशन देखा है, तब ये आप पाएंगे कि जो छोटे जो कंपनियां हैं में मझोले और छोटी कंपनी, उनके ऊपर उनके हिसाब से उनके जितना वो सह सकते हैं उससे ज्यादा दबाव आती है। तो उनके मार्केट से आपने देखा होगा कई इंडस्ट्रीज में, शायद पेंट्स इंडस्ट्री में अगर स्टडी की जाए आप शायद पाएंगे जहां अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स थे वो या तो वो जुड़ गए या बिल्कुल अलग हो गए। तो ये जो फेजेस हैं ये आते रहते हैं जहां पे कंसोलिडेशन हो जाता है एक इवेंट की वजह से, लार्ज इवेंट की वजह से, तो वो आप पाएंगे। तो और पर अच्छी बात यह है कि जो इसमें से इस अग्नि परीक्षा से निकलेंगे वो और बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अडेप्ट करना सीखा है। वहां पे जो एंटरप्रेन्योरशिप है, लीडरशिप है, उनकी जो सिस्टम्स हैं और कस्टमर के साथ, जो ग्राहक के साथ उनका जो रिश्ता है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो उनको डिफ्रेंशिएट कर देती है। तो ये मैं तो इन चीजों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। तो ये जो है ये स्टॉक मार्केट में भी दिखना चाहिए। अब जो इंडेक्स है वो कितना चौड़ा है, कितना रिप्रेजेंटेटिव है। अगर आप 500 स्टॉक्स लेंगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये जो मैंने बात कही है वो आपको दिख जाएगा। जब आप जो आपके इंडेक्सेस हैं वो लार्ज कैप्स हैं, वो इतनी बड़ी कंपनियां हैं, उनकी इतना जबरदस्त टर्नओवर, इतने कस्टमर्स हैं, वो जो उन्होंने जो एफिशिएंसी बढ़ाई कैपिटल को इस्तेमाल करने की, दूसरी चीजों की, उससे वो और भी ताकतवर हो गए हैं। तो अब क्या पाएंगे कि ये और तेजी के साथ आगे बढ़ जाएंगे, और जो बाकी हैं उनमें से जो बाकी के जो छोटे आप जिनके बारे में कह रहे हैं, वो उनके अगर फंडामेंटल सही रहे, बिजनेस स्ट्रैटेजीज सही रही, जिस तरीके से वो बिजनेस करते हैं, ग्राहकों के साथ उनका रिश्ता कैसा है, उनके पास प्रोडक्ट ऑफरिंग कैसी है, ये सब बातें उनको आगे ले। इसमें एक चीज मैं और आपसे जोड़ करके पूछना चाहूंगा, हर तरफ मंदी की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। हालांकि भारतीय बाजार के बारे में हम ये कह सकते हैं कि शायद उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसे में इन कंपनियों के भविष्य के बारे में कोई अनुमान लगा सकते हैं? देखिए, हमारे देश में क्योंकि हमारे बड़ा रैपिडली चेंजिंग इकोनॉमी है, हमारे अब सोचिए ना 5 साल पहले आज जिन कंपनियों के बारे में आप चर्चा करते हैं भारत में के स्टॉक्स में ही और दूसरे वहां पे, क्या हम 5 साल पहले उनके बारे में चर्चा करते थे? तो हमारे यहाँ पे चेंजेस बहुत रैपिडली हो रहे हैं, कई नए बिजनेसेस आ रहे हैं,
पूरे एरियाज खुल रहे हैं, तो वहां पे एक अनुमान लगाना हमारे जैसे देश के लिए, जो चीजें दूसरी देश 10 साल में कर रहे हैं हम वहां पे 5 साल में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे एक अनुमान लगाना तो मुश्किल है, पर जब आपको अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है तो तब आप जिसे वैल्यू स्टॉक्स कहते हैं, जहां पे आपको अर्निंग्स दिख जाती हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अर्निंग्स दिख जाती है, उस हिसाब से आप निवेश करते हैं। आप ग्रोथ की तरफ ऐसे माहौल में एकदम से नहीं जाते, आप वैल्यू की तरफ ज्यादा देखते हैं। Today, 563 was an exception. In the new year, a lot of the markets actually didn't do very well. If you were to count the days when we did very well, out of these 70 days, very few will be there. So, do you think it is to do with underperformance vis-a-vis China, because suddenly they have lifted all their curbs and a lot of money is moving into that market? That's a great question, Rajesh. And there's a fairly now significant number of experts, international experts and investors who are, using the China reopening strategy, etc., and they feel that there's a lot of upside out there, and yes, there's a lot of money that went out, a lot of other Rajesh, interestingly, some of the things that were spooking investors, international investors, the Chinese government has actually done a little bit to assuage them. So like the kind of crackdown on tech, some of the things that they were doing, the harshness, those things they have sort of softened it up a little bit. And yes, of course, as you rightly mentioned, the opening up, they have got, if you see their data which has come out today, it's possibly in almost in 5 decades is one of the lowest growth rates. Yes. So, but ever since they opened it in December, they have done. You will see a spurt. That's the early readings that people like me have got. So you will find that because of the opening up, some of that growth will come back. Now, how much of it will come back? There are a lot of people who say that all these infections and all these incidences will get normalized by the middle of the year, and so we will be competing for international capital. We'll be taking a short commercial break and be back with you very soon. अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग हेतु संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। और उद्यन, अभी हमने तमाम वैश्विक मुद्दों का जिक्र किया। अभी दावोस में ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग भी चल रही है। इसमें कौन कौन से मुद्दे उठाए जाने की संभावना है? देखिए, जो मुद्दे दावोस में उठाए जा रहे हैं वो वही है कि सबसे मंदी का जो एक एप्रीहेंशन है वो सबसे ज्यादा है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, उससे जुड़ी क्लाइमेट चेंज। अब जब हम पहले क्लाइमेट चेंज के बारे में बातचीत होती थी तो लगता था कि वे सेमिनार तक सीमित है, या कुछ बेचारे ऐसे देश हैं जिनके साथ आप हमदर्दी करेंगे, कुछ करने की कोशिश करेंगे। अब वो बातें बताने की जो टाइम है वो पीछे रह गया। हर देश में, भारतवर्ष में भी क्लाइमेट चेंज का असर दिखना शुरू हो गया। तो ये कुछ जो मुद्दे हैं, ये कुछ एल्ट्रुइस्टिक या मतलब हाई लेवल की बातें नहीं रही, ये आपके बिजनेसेस को भी इम्पैक्ट करते हैं। तो डिस्ट्रप्शन, एक सप्लाई चेन में एक सिक्योरिटी, एक कॉन्स्टेंसी, मार्केट एक्सेस के बारे में तो वहां पे बातचीत होगी नहीं इतनी ज्यादा, पर ट्विन ट्रैक में जहां पे अगर बायलैटरल या 1-to-1 लेवल में अगर बातचीत होती है वहां पे ओपन अप करने की बात हो सकती है। पर दिलचस्पी की बात यह है, कुछ आंकड़े अभी निकले हैं और वो ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम पिछले कुछ सालों में आगे बढ़े हैं, जब हमने जिसमें सप्लाई चेन को हम सिक्योर करने की बात कर रहे हैं, हम बायलैटरल ट्रेड कर रहे हैं, तो जितनी हमारी ग्लोबल इंटरलिंकेजेस कम हो रही हैं
उसका असर अब दिखना शुरू हो गया कि हमारे ग्लोबल ग्रोथ में, हर देश की ग्रोथ में पड़ना शुरू हो गया। तो ऐसे मौकों में कोशिश ये करनी पड़ेगी कि हम इतने संकीर्ण दायरे में ना पहुंच जाएं जिससे हम सबकी जो इकोनॉमी बिल्कुल उस पर असर पड़े, जॉब्स पर असर पड़े, इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर पड़े। So the theme of the World Economic Forum is cooperation in fragmented world. So what you said, perhaps when it comes to helping each other out during this time of recession, though it is officially not out, but everyone is kind of acknowledging it. I hope this cooperation takes place starting from World Economic Forum. Now we also have the G20 presidency. India is heading it, and it gives us the opportunity to put issues of interest that India has at this platform. So what are these issues that India can take advantage of due to the G20 presidency? There's plenty, Rajesh, but I would say I would maybe not point to a central theme, but an perhaps it could be linked to cooperation. Oh, absolutely. But G20, what the presidency, what it also does, India also would, I'm sure, is aspiring to be a champion and a spokesperson of the global south, and that's a whole lot of countries. That's basically the majority. So we are talking about Africa, we are talking about LATAM, all kinds of countries, and they're huge. Okay, possibly maybe 80 to 100 countries. So we want to become, I'm sure India wants to become a spokesperson, representative of the global south, and their issues, economic and other issues, are far different from, say, some of the top 7 G7 kind of countries. So we have got food security, we have got health related cooperation, all the things that we have been talking about. Now you need a high table, you need a platform in which you can put that point across. Now just because 7 or 10 or 15 sort of rich countries would want the global economic order to, say, for instance, adopt certain rules for, say, agriculture. That may or may not be in the interest of the global south. So it gives us that opportunity to, moderate and fashion the global narrative, the global conversation, so that it's more balanced. We don't look like or sound like whiners who are whining, and we are not, every time you have some of these meetings happening and they said, oh, because of India something didn't happen. But by the way, India is actually representing a very large number of countries, and those are important for us too. So basically our interest and that of the interest of the global south. So if you look around our neighborhood itself, some of the issues that affect them are not the issues of, say, Europe or North America. Correct. So it's important for us to not only speak for our citizens, but for them also. So do you think the market's a bit nervous on what happens on the 1st of February? If nothing happens, I think markets will rally. If something happens, do you think the markets have factored that in? Rajesh, it will be episodic, very few, effect of budget is typically overstated, but people look for cues. Sometimes some of the smaller details are the ones which affect you. People might be looking for some kind of changes in tax, etc., etc. But Rajesh, if there is one thing market is going to look at, they are going to be looking at the government borrowing. Okay. So that is going to be, where is it heading? And depending on the lead up to the budget, whatever information market gets about government borrowing is what will be very crucial, internally and externally. Because then are we getting back to that path of fiscal prudence? We had to let it go for a little while, slacken it a little bit. Are we getting back? If we are getting back, then the confidence internally and externally in our markets will remain, and it will go from strength to strength. उद्यन, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। दिसंबर के डेटा की अगर हम बात करते हैं, तुम्हारा निर्यात लगभग 12% घट गया है। नो डाउट इसमें कि विदेशी वैश्विक चुनौतियां इसके लिए जिम्मेदार है, हर देश इससे प्रभावित हो रहा है। आने वाले समय में भारत क्या इससे और अधिक प्रभावित हो सकता है?
बिल्कुल हो सकता है। अगर हम दूसरे देशों में मंदी के बारे में बात कर रहे हैं तो जैसे कि मैं इस प्रोग्राम में कहता हूं, हम अछूते तो नहीं रह सकते और तो उससे हमें असर पड़ेगा। असर कैसे पड़ेगा? कई ऐसे एरियाज हैं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती, दूसरी चीजें होती हैं, जहां पे एक्सपोर्ट मार्केट के लिए ही बनती हैं, तो वहां पे सपोर्ट की जरूरत होगी, वहां पे मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर जब भी स्लो डाउन सा होगा वहां पे वो दिक्कत आएंगी। और काफी कुछ जो है, इवन दैट इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो पिछले 2-3 साल में काफी बदल गया। जिस तरीके से आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, उसमें एक रेवोल्यूशन सा आ रहा है और वहां पे भी एडजस्ट करना है। पर हाँ, शॉर्ट आंसर ये होगा कि इफेक्ट तो होगा, पर हमारा जो कोर जो जीडीपी का हिस्सा है वो बाहर से नहीं आता। लकीली हमारे अंदर की ऑलमोस्ट कॉन्टिनेंटल साइज इकोनॉमी है, वहीं से आएगा। तो जो भी हम लोग फोकस करेंगे इंटरनली तो हमें करना पड़ेगा, ज्यादा फोकस उधर करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट रिलेटेड जो हमारे बिजनेसेस हैं वहां पे ये देखना पड़ेगा कि उनको बेवजह परेशानी ना हो, सपोर्ट मिले, ताकि ये जो पीरियड है वो निकल जाए। इसमें एक चीज और जुड़ जाती है, मंदी की आहट है, लेकिन भारत हर फोरम पर, हर मंच पर जाकर के अपनी बात रख रहा है, कहीं ना कहीं देशों को जोड़ भी रहा है अपने साथ में। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट हम पर जरूर पड़ेगा कि मंदी की कम से कम मार हम पर पड़े। देखिए, कई बार हम एक बहुत जो अच्छी बात हो रही है पिछले कई सालों में, वो उसमें ये है कि हमारी जो डिप्लोमेसी है वो उसमें इकोनॉमिक्स जुड़ गई है जी। तो जब आप एग्रेसिवली करते हैं तो रास्ते निकलते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दूसरी चीजों की, कंपनी टू कंपनी, ये सब चीजें होती जाएंगी। तो इसके वजह से जो कई बार साइकिल अगर डाउनवर्ड भी मूव कर रहा है ग्लोबली और हमारे यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, तब भी जो है हम उतने ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे जितना दूसरे देश जा रहे हैं। पर हमारे तो पॉजिटिव ग्रोथ है, हाई पॉजिटिव ग्रोथ है, पर जो ग्रोथ हमें चाहिए वो 7%, 6.5% से काम नहीं बनेगा, हमें उससे बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। और हमें हम जो चीजें करना चाहते हैं, हमारे जितने एक्साइटिंग प्लान्स हैं, एम्बिशियस प्लान्स है, उसको पूरा करने के लिए 7% काफी नहीं है। ये तो वही वाली बात होगी, 60% से क्या आप खुश हैं कि आप 80 या 100 लाना चाहते हैं 100 में से, तो हमारी जो एम्बिशन है वो ज्यादा है जी। अब एशियाई बाजार पे हम नजर डाल लेते हैं। एशियाई शेयर बाजारों में आज अधिकतर गिरावट का रुख देखा गया। केवल जापान का निक्केई सूचकांक 1.2% के लाभ में रहा। वहीं दूसरी तरफ चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक दोनों ही मामूली 0.1% के नुकसान के साथ बंद हुए। हांगकांग का हेंग सेंग सूचकांक 0.8% लुढ़क गया और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.9% की सुस्ती दर्ज हुई। यूरोपीय शेयर बाजार पर नजर डालें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में यहां भी गिरावट देखी गई। लंदन का FTSE 100, जर्मनी का डेक्स और फ्रांस का CAC 40 अंतिम समाचार मिलने तक 0.2% नीचे आकर कारोबार कर रहे थे। The US markets were closed yesterday due to Martin Luther Jr. Day being observed there. Moving on, oil prices today logged modest gains as recent shift in Chinese COVID-19 policy underpinned hopes of a recovery in fuel demand this year. On the other hand, reports of second weakest annual economic growth of China in nearly half a century kept the gains in a limit. In intraday trade, Brent crude was trading at $85.50 per barrel, while WTI crude prices was at $80.20 per barrel. Udayan, given the China and US stories now, where do you see the oil going? Well, it pretty much depends, Rajesh, how the reopening, so-called reopening of China will happen. US, still the growth is robust, it's not bad at all. So maybe the story would play out in some months and we'll get, so far things are, if China keeps improving, things will be perk up, it'll get reflected in the oil as well. But it's probably the story that's waiting to play out. और अब सोने पर हम नजर डाल देते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य अंतर्दिवसीय कारोबार में 80 रुपए गिरकर 56,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। मार्च अनुबंध वाली चांदी 380 रुपए की गिरावट के साथ 69,400 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना सुस्त होकर $1,909.40 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था और अंतर्दिवसीय कारोबार में चांदी लुढ़ककर $24.10 प्रति औंस पर चल रही थी। उद्यम जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you for being with us today. And before we close the headlines once again,
Domestic stocks witnessed gains of around 1%. Sensex closes above 60,600 level. Nifty settles above the 18,000 mark. Gold hovered around 56,400 rupees per 10 grams at MCX for February contracts, and Brent crude rises to $85.50 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, good night. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.